Welcome to AffairsCloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बुक्स एंड ऑथर्स एंड ऑबिटरी के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे अप्रैल मंथ के। बेहतरीन सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। पहला, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा सीपी राधाकृष्णन, इन्होंने रिलीज़ की द टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल्स इन पार्लियामेंट। इस बुक को ऑथर किया गया किन के द्वारा? सुधा मूर्ति के द्वारा। नेक्स्ट, किन्होंने ऑथर की ऑटोबायोग्राफी अ रोड वेल ट्रेवल्ड, तो किन के द्वारा ऑथर की गई है? ये ऑथर की गई है R.K. राघवन जी के द्वारा। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंथोलॉजी जो कि नीति आयोग के द्वारा लॉन्च की गई ताकि इंडिया में टूरिज्म पोटेंशियल को प्रमोट किया जा सके? वो है दिव्या भारत, अ विंडो टू द सोल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो उन फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जिन्होंने लॉन्च की बुक द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज इन अप्रैल। तो किन के द्वारा? वो कौन है? वो है मनोज मुकुंद नरवाने। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये तो हो गए बुक्स एंड ऑथर्स। अब आ जाते हैं ऑबिटरी पर। पहला क्वेश्चन, चंद्रिका प्रसाद चंद संतोखी, ये प्रोमिनेंट लीडर हैं ऑफ इंडियन डायस्पोरा जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया। इन्होंने सर्व किया प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फ्रॉम 2020 से 2025 तक? तो सुरीनेम के ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वेटरन इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर हु सर्व 3 टर्म्स इन लोकसभा पास्ड अवे इन अप्रैल एट द एज ऑफ 94? वो है मोहसिना किदवाई। नेक्स्ट, वो पहले अमेरिकन माउंटेनियर कौन बने टू समिट माउंट एवरेस्ट ऑन 1 मई 1963 जिनका भी निधन हो गया है? वो है जिम विटेकर। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वेटरन इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर पॉपुलरली नोन एज दालू बाबू, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 88। किनकी हम बात कर रहे हैं? अबू हसीम खान चौधरी। नेक्स्ट, किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड थे चिंगप्लेट दोराईकाना गोपीनाथ, दैट इज सीडी गोपीनाथ, जिनका भी निधन हो गया? तो ये क्रिकेटर थे। 96 की एज में चेन्नई तमिलनाडु में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर आशा भोसले जी जिनका भी निधन हुआ था अप्रैल में। तो ए ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, बी गलत है। तो ए एंड सी हमारा आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट, महावीर चक्र अवार्डी वाइडली नोन एज द लायन ऑफ लद्दाख, राइट कौन है वो जो महावीर चक्र अवार्डी हैं लायन ऑफ लद्दाख के नाम से जानते हैं? वो है सोनम वांगचुक। इनका निधन हो गया अप्रैल 2026 में। नेक्स्ट, नेम द पर्सन हु वाज फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एंड वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन जिनका भी निधन हो गया अप्रैल के महीने में एट द एज ऑफ 77 इन चेन्नई तमिलनाडु। तो हम किन की यहाँ पे बात कर रहे हैं? वो है R.N. रामचंद्रन। नेक्स्ट, पद्मश्री अवार्डी एंड बुंदेली मार्शल आर्ट पायनियर भगवान दास रायकर, इनका निधन हो गया अप्रैल 2026 में एट द एज ऑफ 83 इन भोपाल मध्य प्रदेश। इन विच ईयर वॉज ही कन्फर्ड द पद्मश्री अवार्ड इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स? तो 2026 में इनको सम्मानित किया गया था पद्मश्री अवार्ड से। नेक्स्ट, उन इंडिविजुअल का नाम बताइए जो फॉर्मर राज्यसभा मेंबर रह चुके हैं एंड वेटरन जर्नलिस्ट जिनका निधन हो गया अप्रैल के महीने में एट द एज ऑफ 76 इन न्यू दिल्ली। वो हैं बलबीर पुंज। तो दोस्तों, ये थे इंपॉर्टेंट कुछ करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रांग होगी। लेट्स मूव टू सम वन लाइनर्स। फर्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंस। CCI हैज अप्रूव्ड निपन स्टील कॉर्पोरेशंस एक्विजिशन ऑफ क्रोसाकी हरिमा कॉर्पोरेशन। सो निपन स्टील विल बी एक्वायरिंग क्रोसाकी कॉर्पोरेशन। देन SBI State Bank of India promotes India-Israel trade in rupees as FTA talks gain momentum. FTA is your free trade agreement. Then first meeting of the payments regulatory board held under the RBI Governor Sanjay Malhotra. Then Exim Bank, that is your Export and Import Bank of India, has raised $1 billion through dual tranche US dollar bonds in the first 2026 debt issue. Then India's GDP projected to grow by 9% in FY26 as per the data released by Indra. Then DICGC has issued 5% of bank deposit fund balance to raise 2.29 lakh crore
as of March 2025. Then State Bank of India again, they have launched first global capability center in Bengaluru, Karnataka. Then Goldman Sachs projected India's GDP growth at 8% in FY27. Amazon Pay, they have launched fixed deposits through app in partnership with NBFCs and various banks. And IDFC First Bank, they have launched Zero Forex Diamond Reserve Credit Card for global travelers. Then some national affairs students. UIDAI, they have launched a mascot by the name UDAI to make services more people friendly. This is a new mascot that has been unveiled by them. Then India became the first country to commercially produce bio-bitumen for sustainable road construction. Then Naguri Ashwagandha gets the GI tag. Then Simply Learn, they have partnered with India AI Mission. This was launched by MEITY to launch UA AI for all foundational course. Then New Delhi World Bank Fair 2026 began at Bharat Mandapam, which is in New Delhi. Then Uttarakhand Police has topped the ICGS 2.0 ranking. New reed snake species Calamaria mizoraменsis discovered in Mizoram, and on the name of Mizoram state only it was named. Then India Energy Week 2026 to be held in Goa from 27 to 30th of January. India's first fully paperless district judiciary inaugurated in Kallapitta, Kerala, and I gave you this homework also yesterday, important one. Then Bengaluru has topped India's 2025 women friendly cities ranking for safety and employment. Then some appointments and resignation. Justice Revati Mohite Dere sworn in as the first women Chief Justice of Meghalaya High Court. Then Soman Sen sworn in as the new Chief Justice of the Kerala High Court. Then Meta appointed Dinah Powell McCormick as President and Vice Chairman. Justice A. Mohammad Mustaq sworn in as the 24th Chief Justice of Sikkim High Court. Prakash appointed the CEO of Health Insurance Ecosystem by General Insurance Council. Then next is Ida Liu appointed as the CEO of HSBC Private Bank. Then Bala Subramaniam assumed the charge as the Chairman of Atomic Energy Regulatory Board. Then Ramesh Kumar Juneja assumed the charge as the Chairman of the Council for Leather Exports. So these are certain one-liners. Now let's move to the main content. Let's start with one-liners, that is for appointment and resignation. Ram Prasad Sridharan appointed as the Managing Director of Puma India. Then DP World has signed Abhishek Sharma, the famous cricketer, as the brand ambassador. Then Air Marshal Tejbir Singh has assumed the charge as the Director General for Inspection and Safety at the Air Headquarters. Then Paschal Donohi appointed as the World Bank Group's Managing Director and CKO. Then RBI appointed CA Usha Janakiraman as the new Executive Director. Then Praveen Kumar has taken the additional charge as the BSF Director General. Then Ramakrishnan Chandra takes charge as the new Managing Director of LIC Life Insurance Corporation. Then Manali Shirsagar became the first full-time women Vice Chancellor of the Nagpur University. Then is banking and finance. CBDT, Central Board of Direct Taxes, they have launched the second nudge campaign to ensure the accurate reporting of the foreign assets and income. Then SEBI, they have eased the educational criteria for the investment advisors and research analysts. NPCI's Banking Connect has launched the enabled real-time RBI monitoring and boost bill payment system. Then RBI has imposed a 3.1 lakh rupees penalty on the Mana Krishna investment for the governance violation. Important is the amount here. Then India along with Asian Development Bank, they have signed a $800 million plus loan for power, metro and skill development projects in India. Then Center will be investing 4,500 crore rupees to modernize the Mohali Semiconductor Laboratory that will boost India's chip manufacturing. Then is international use. CEC Ganesh Kumar became the chairperson of the International IDEA for 2026. India re-elected to the IMO Council for 26-27 term with the highest vote count in the category B. Then our country India again was ranked third here in the Asia Power Index, achieved the major power status here. Then Prime Minister Narendra Modi unveiled the Dr. Babasaheb Ambedkar bust at the UNESCO on the Constitution Day. Then Jakarta became the world's largest city as the UN report highlights of the Asia dominance in the mega cities index. Then India was ranked 8th at the debut was ranked at the 8th in the debut means the first World Skills Asia 2025. Then Riyadh Metro became the world's longest driverless metro network. Then Leonardo has unveiled the AI powered Michelangelo
DOM, a multi-layered air defense system in Euro. Then Oxford University Press has named rage bait word as the word of the year 2025. So these are some important one-liner, students. Now let's move to the main content.